So hello guys, and now we'll start with the judicial activism. Again, developed in USA, first time coined by Arthur Schlesinger 1947. Arthur Schlesinger in 1947. India में it was first time coined by mid 1970s by Justice V.R. Krishna Iyer, P.N. Bhagwati, D.A. Desai and Ochinapa Reddy. Okay, so इन लोगों ने पहली बार coin किया होगा. Also known as judicial dynamism. What does it mean? It is the assertive role played by the judiciary to force the other two organs of government to discharge their constitutional duties. Activism क्या होता है? Like you are proactive in taking care of things. So when judiciary feels कि executive and legislature are not doing their work properly, then judiciary can something do from their side to make them do their constitutional duty, to discharge their duties, right? Just don't stick to what's law. Also make sure that laws are in compliance with constitution and the progressive and the new social policies. This is kind of so ideally अगर देखो तो it's kind of intrusion in the legislative and executive thing, because उनको तो separate रहना था, but ऐसे किसी को बोल लो कि भाई नहीं ये गलत है, तुमको सोशल चीज़ें फॉलो करनी है, तो आइडियली अगर देखोगे तो रॉन्ग है. बट तुम वैसे देखो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना मैनेज करने वाला, कुछ गलत कर रहा है तो कोई तो रोकेगा, राइट? दैट इज इट. So it is a procedure to evolve the new principles, concepts, maxims, formulas and relief to do justice to the litigant, and also open the door of courts to the needy to entertain any litigation which affects the entire society or a section of it. ठीक है. One way was the PIL, public interest litigation. So this judicial activism of Supreme Court which gives rise to PIL. What's the difference between judicial review versus judicial activism? GR is just about invalidating laws जो बन चुके हैं, right? Which are also about which are violative of constitution. Judicial activism is also about the judges participating in the law making policies, right? वो उसको भी जज करता है जो लॉ मेकिंग पॉलिसीज का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आता है यहाँ पे. सो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज इनहेरेंट इज जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल एक्टिविज्म एज रिगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फॉल्स अंडर the fabric of the what is called judicial review. ठीक है. Justification of judicial activism. When legislature fails to discharge its responsibilities, कौन देखेगा? Judiciary देख लेगी भाई. तो करो काम करो, ऐसे बोलेंगे. In case of hung legislature, when government it provides is weak and busy for survival, तब बोलेगी कि भाई क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट से बोलेगा judicial activism में कर क्या रहे हो? काम करो अपना यार. Those in power are afraid of taking honest and hard decisions for fear of losing power. When people look for judiciary to protect their rights, लोग आके बोलते हैं कि भाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है. जैसे भी पूजा खेड़कर का केस है, यूपीएससी ने लाइक उसको हायर किया, PWD कोटा वोटा लगा लिया, तो आई लाइक वी कैन फाइल PIL फॉर दैट कि भाई ऐसे कैसे कोई हायर हो सकता है, राइट? तो दैट इज समथिंग जुडिशियल एक्टिविटी. When court of law is misused by a strong authoritarian parliamentary party government for the ulterior motives as was sought out in emergency times, तो ये सब काम आता है. Also when there is expression of judicial control over discretionary powers. ठीक है. Activators of judicial activism, तो civil right activists होते हैं. There are groups which focus on civil and political rights issue. People rights, there's a social and economic right people के, वो लोग एक्टिव से ग्रुप ऐसा होता है. कंज्यूमर राइट का ग्रुप होता है, वांटेड लेबर का ग्रुप होता है, वेज स्लेवरी खत्म करने के लिए वो कुछ बोल सकते हैं. सिटीजन्स फॉर एनवायरमेंटल एक्शन हो सकता है, किसी लाइक किसी इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए हो गया तो उसके लिए खड़े हो सकते हैं, सिटीजन्स फॉर एनवायरमेंटल एक्शंस. कॉमन ग्रुप्स विच आर अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे इंदिरा गांधी डैम बना था कहीं पर तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, चिपको मूवमेंट हुआ था, वो सब एक ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं कि दीज थिंग्स जो सोसाइटी के हिसाब से होने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया. राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप के लिए, फोर्स्ड लेबर रोकने के लिए सब ग्रुप बन सकते हैं. कस्टोडियल राइट्स ग्रुप, लाइक प्रिजनर्स के राइट्स बचाने के लिए वो सब हो सकता है. तो ये सब है. Apprehensions of judicial activism. There is some ideological fear कि like judicial activism can also look for usurping powers of the legislative and executive. Possible. Epistemic fears. Are there enough knowledge? Exactly. But उनको इतना judicially को इतना क्या पता कि economic और social life, what is the social life and economic life of the people? जुडिशरी अपना काम करने आए. लाइक जुडिशियल कुछ पूछोगे दे विल टेल, लाइक वकील एडवोकेट्स लैंग्वेज में दे विल अंडरस्टैंड, बट इकोनॉमिकली लोगों को क्या चाहिए, सोशली क्या चाहिए, वो तो उनको नहीं पता. एंड देन देयर इज मैनेजमेंट फियर्स आल्सो. आर दे डूइंग जस्टिस बाय एडिंग दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन? वर्कलोड ही बढ़ा रहा है तो क्या, हाउ विल दे हैंडल ऑल दिस थिंग? And there is legitimation and democratic fears. Like they are not legitimate body. They are not legitimate body, right? They are not appointed. They are not elected by the people of India. They are the people जो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको लोगों ने इलेक्ट किया, तुमको थोड़ी इलेक्ट किया है. सो
These are the questions which are apprehensions of the judicial activism. So judicial activism versus judicial restraint. They say judiciary jobs should be merely decided as per the law and leaving the business of lawmaking. Yes, judicial restraint. Assumptions of judicial restraint in favor. एक तो कोर्ट बेसिकली अनडेमोक्रेटिक एंड नॉन इलेक्टेड बॉडी, तो वो कैन कुछ नहीं बना सकते हैं. क्वेश्चन ऑरिजिन ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, अ पावर नॉट ऑफिशियली ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जैक्टली, जुडिशियल रिव्यू तो दिया गया है, बट जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. द डॉक्ट्राइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स बोला कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी दे शुड ऑल बी सेपरेट. सो व्हाई आर यू इंडल्जिंग इन दैट अफेयर? The concept of federalism, the dividing power between nations, it requires the court with indifference towards the action of state government and officials. Yes, judiciary काम ही यही है कि आपको फिर यही देखना है कि without any partiality, concept of federalism, the dividing power between the nations and the state, that requires कि कोर्ट किसी भी तरफ इंक्लाइन ना हो. सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 2007 में क्या आया था? इसने बोला कि देयर आर केसेस ऑफन व्हेन जुडिशरी इज ट्राइंग टू परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस. सो जजेस को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, मस्ट नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट. ओके, कोर्ट मस्ट नॉट एम्बेरस द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड मस्ट रियलाइज दैट दे हैव द एक्सपर्टीज, नॉट द कोर्ट्स. बोला दे मे टेक सम टाइम बट दे हैव द एक्सपर्टीज एट द एंड. Justification courts give that legislature and assembly not doing their jobs properly, but same thing can be said for courts. Bhaiya, there are a lot of area of cases that for half a century lot of cases are pending in courts, and you are saying ki legislation and assembly is not doing their work. You are not doing their work, right? हमारे पास तो केस पेंडिंग है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? If legislative and executive is not functioning properly, then people need to decide it in next elections. You are not the right authority to do so. Remedy is not to take over the legislative and executive functions. Yes. So judicial restraint should be true, as it recognizes that there are three separate organs of government and we should work on minimizing the inter-branch interference. That's the judicial activism for you guys.